गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे और आबाद भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबशिर। गाइस, जैसा कि आपको पता है, काफी मतलब बीमारियां जिनका पाकिस्तान में भी इलाज नहीं होता और इंडिया के पास होता है, तब भी काफी ज्यादा पेशेंट यहाँ से जाते हैं पाकिस्तान इंडिया और वहां पर इलाज कराते हैं। और इंडिया के डॉक्टर्स, हमने इस तरह पहले भी कुछ वीडियोस किए, इतने अच्छे हैं, इतने वो मतलब कमाल के डॉक्टर्स हैं, एक अच्छे से ट्रीट भी करते हैं और उनका इलाज भी अक्सर फ्री भी कर देते हैं भाई। तो आज ही कोई इस तरह का केस है, मिरेकल एट अपोलो शायद इंडिया का हॉस्पिटल है, कौन है मुझे नहीं पता, हॉस्पिटल है या क्या, हॉस्पिटल ही होगा। द स्टोरी ऑफ पाक टीन अफशीन स्पाइनल सर्जरी, मतलब स्पाइनल सर्जरी की है उसकी इंडिया के डॉक्टर ने कैसे की है, जो पाकिस्तान में इम्पॉसिबल थी शायद, या क्या सीन है, ये हम वीडियो देखेंगे तब हमें सही से पता लगेगा। और इस नन्ही सी जान को बचाया इंडियन डॉक्टर्स ने। तो देखते हैं जल्दी से, काउंट डाउन करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। Afsheen Gul, a 13-year-old Pakistani girl who spent most of her life with her neck twisted at a 90-degree angle, has undergone life-changing surgery at Delhi's Indraprasth Apollo Hospital. Afsheen has never been to school or played with friends because of this condition. She also afflicted with cerebral palsy and had a rare condition that made her neck bend and her head sit at a 90-degree angle. Her father, who was a laborer, died in 2020, but 2 years before his passing, there was a ray of hope for the family. Afsheen's eldest brother, Mohammad Yaqub Kumar, heard about spine surgeon Dr. Rajgopalan Krishnan at Delhi's Apollo Hospital. डॉक्टर कृष्णन के बारे में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी। उस लड़की का नाम था महेंद्र आयरवार। तो उसकी जो है ना वो यूट्यूब पे वीडियो थी सर्जरी की। तो उसको मैंने देख के फिर डॉक्टर से रब्ता किया मैंने। फिर डॉक्टर ने हमें बताया कि कैसे सर्जरी होगी, कैसे इसका इलाज होगा, कैसे इसका वीजा होगा। वो हमें जो है सारा कुछ डॉक्टर ने गाइड किया। तो डॉक्टर ने गाइड किया, फिर हम चले आए। Yaqub raised funds through crowdfunding for Afsheen's treatment. Finally, Yaqub and Afsheen flew to India in November last year and met Dr. Krishnan. Actual diagnosis in the neck was a chronic, neglected, severe atlantoaxial dislocation. That is the C1 vertebra along with the skull tipping over the C2 vertebra, dropping to the left side and rotated 90 degrees. So I don't think I have seen such a deformity. And she had spinal cord compression and cervical myelopathy. Cervical myelopathy means compression of the spinal cord leading to neurological dysfunction or deficit in the upper and lower limbs, depending on where the site of compression. Spinal surgery is बहुत मुश्किल होती है। Dr. Krishnan diagnosed Afsheen with atlantoaxial rotatory dislocation. First stage was putting her in halo gravity traction. So she had a ring round the skull with pins going into the skull and weights attached to it. When she was lying in bed, weights attached to a bed pulley system, and then when she sat in a wheelchair, weights going through an overhead pulley. So we kept her in traction with gradual distraction and monitoring her clinical and neurological status. Nothing went wrong, for which we are very thankful. After a few weeks, we repeated the scan, which showed that the rotation had diminished. Decreased significantly. So from 90 degrees, it had reduced about 60 degrees. And 60 degrees पे हो गया था, हाँ भाई। The problem is the dropped head didn't correct as सही जगह पे सर जो है ना। I expected this because in a growing child, after 12 years, the bones adapt. This applies to any part of the body. So she had bony adaptive changes which prevented adequate repositioning of the skull on C2 and the trunk. Second step was the second surgery to release the sternocleidomastoid muscle, which takes origin from the sternum and the inner or medial 1/3 or half of the clavicle collarbone, and then inserts in the mastoid process behind the ear. You can actually see it contracting when I turn the head. So I modified conventional procedures
rather than just releasing them at the origin and the insertion, I took out segments, a couple of centimeters top and bottom. The idea behind this was we can't stop the dystonia, but remove the fulcrum so that even if the lever arm keeps contracting, it can't pull on anything. It's been detached above and below. So scans later showed that the deformity was further corrected. डॉक्टर बहुत कमाल के और एक्सपीरियंस वाले हैं भाई. Which happened on the 28th of February. I had a long discussion with the family on the और ये Sunday. दिसंबर में मेरे ख्याल में इधर आए थे. I told मतलब them काफी टाइम लगा इसके लिए. बहुत टाइम she could लगा. die during the surgery, she could die afterwards. मार भी सकती थी. पहले उन्होंने बोला है 60% तक उनकी जो है ना इस तरह की है, फिर मतलब 60 डिग्री तक हुआ है, फिर उसके बाद जाके was high. They understood. डेथ रिस्क And जो they था wrote me a message which I think touched my heart. The family asked, if she does die, how will we get the body back to Pakistan? हाँ And I मतलब decided फैमिली ने I'll do बोला the था कैसे best, लेकर to make sure she doesn't die on the table. The surgery on February 28 lasted over 6 hours, and by the end of her neck was अगर डेथ हो गई straightened. तो कैसे Although लेकर जाएंगे. she will have to wear a brace for some time for the neck to stabilize. ये जो पहना Over the next few months, Dr. Krishnan and his team will monitor Afsheen once a week through Skype. वाह स्काइप से भी मतलब बात करेंगे. हाँ, बात मतलब करेंगे. ये मतलब मतलब कुछ monitor अरसा जो करेंगे, है उसको देखेंगे. ये बेल्ट इधर लगी रहेगी यार. मतलब इतना मुश्किल ऑपरेशन पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने तो देखते ही मतलब हाथ खड़े कर दिए थे बिल्कुल. और बोला होगा कि मतलब नहीं यार ये अब इधर नहीं होता है. वाकई यार और नहीं होता, वाकई नहीं जो होता है. लेवल इंडियन डॉक्टर्स का मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में किसी का नहीं है. जिस- पहले तो यार मैं सलाम करना सलाम चाहता है हूँ वाकई डॉक्टर्स में, को. वाकई में. कितनी पाकिस्तानी लड़कियों बच्चों की जान बचाई है. बिल्कुल. मतलब ये डॉक्टर कमाल है यार इंडिया के. यार कोई इसमें- 5-6 महीने उधर रही है, फिर इधर आएंगे, मतलब फिर भी स्काइप से बात होगी, स्काइप पे बात सारा आगे भी कुछ. महीनों पे और चलती इनकी रहेगी. डेथ हाँ. के जो है ना चांसेस और बहुत उन्होंने ज्यादा बोला था कि ऑपरेशन में. 60% पे मतलब 90 डिग्री से एंगल जो पे है ना. मतलब वो गर्दन हुई हुई थी ना. तो ये इन लोगों ने वेट शीट लगा के मतलब वो किया हर बेड के साथ. अच्छा व्हील चेयर के साथ हर जगह पे मतलब वो पुली के हाँ. जरिए मतलब किया और 60 पे उसको एंगल पे ले आया. जब डॉक्टर ने बोला ना मुझे मतलब वो दिल को उसकी हाँ, बात जब छू गई, छुआ, जब जब उसने उसके कहा भाई कि ने यार बोला कि- हम इसकी डेड हाँ, बॉडी किस तरह लेकर इसकी जाएंगे, डेड बॉडी हम कैसे ओ वापस भाई लेकर यार जाएंगे. वो बात वाकई सल्यूट है सच में डॉक्टर्स को. और मैंने जितना सुना है ना उन्होंने फ्री की है ये सर्जरी. मेरे यार ख्याल से guys, जितना आप मैंने लोग सुना. कमेंट में बताना. हाँ. मुझे नहीं आइडिया शायद हाँ फ्री क्योंकि पहले भी इधर यार इस तरह के अगर कोई केस आता है ना तो डॉक्टर के पास इधर लेकर जाते हैं, वो सीधा बोलते हैं कि भाई हमारे पास नहीं होगा. और अगर वो होगा भी तो लाखों पहले दो. जमा करा तब और दो. यही इंडिया में जाकर कितने में हुआ और है भाई हमें नहीं इंडियंस पता का यार सल्यूट मैंने है यार एक सच बात में. नोटिस की. इंडियन डॉक्टर कोई भी हो उनके दिल बहुत बड़ा. बिल्कुल. भाई ये मतलब ये चीजें सीरियसली वो बीच में नहीं देखते. बिल्कुल. और यार मतलब वो हमने पहले भी एक किया था कितने हाँ. उन्होंने बोला था 10 लाख. बिल्कुल. और हालांकि उनका वो डॉक्टर्स का पैसा फोर्टिस- ज्यादा लग गया. फोर्टिस हॉस्पिटल में जो था, डॉक्टर्स हाँ. का पैसा ज्यादा लग गया था लेकिन वो 10 लाख ही 10 लाख ही उन्होंने लिया था. मतलब जो उन्होंने मांगे थे शुरू पे. और हालांकि प्रोसीजर 1 करोड़ तक पहुंच गया था. बिल्कुल, और बिल्कुल. तब भी उन्होंने वही 10 लाख लिए. तो वहां पर हम फैन हुए थे. यार क्या डॉक्टर्स हैं इंडिया के. यार आप लोग क्या कहते हो यार. गाइस. इस तरह की और भी स्टोरीज हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं. इधर वीडियो खत्म करते हैं. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार.